Well, the summers haven't really arrived, but it is starting to get really warm and well sweaty at the same time because of all the heat that was brought in day number one. Of course, ladies and gentlemen, welcome to day number two of eISL season two, brought to you by Nodwin Gaming. I'm your host Fixes. Joining along with me is going to be none other than TT, who is apparently not an ATK Mohan Bagan fan. Thank you so much, Fixes. But kind of. I'm not that big fan of ATK मोहन बगान. But वो होता है ना कि एक इस्ट बंगाल फैन जो है मोहन बगान फैन नहीं बन सकता. So kind of वो डर भी हम लोगों को जरूर बाद में देखने के लिए मिलेगा टूर्नामेंट के अंदर. बट आज के जो मैचेस हैं, आज के मैचेस बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फॉर श्योर. एंड कल के दिन के भी एक टीम हम लोग को आज खेलते हुए देखने के लिए मिलेंगे. सो सब मिला के अगर बात किया जाए, सो eISL सीजन 2 डे 2 बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके के मैचेस हम लोगों ने विटनेस किए थे, उसके बाद एक चीज़ तो पक्का पता है कि जितने भी टीम्स आज खेलने वाले हैं, सब कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले हैं. You know, one thing for sure that what I've taken from yesterday's game is, well, every single player has to watch out for Charan. No wonder. I mean, this guy, he went up against Aranj and Bangalore FC. They're going to be so happy with this signing because he did not even let Saranj take a chance at even scoring a goal. So that was how dominant he was. Of course, we also did witness, how good DK and Arvind were together as a co-op unit. And that is again one of those things that we're also going to talk about. But let's take a quick look at the format and see how this season of eISL is going to pan out. Of course, we are in our league stages from the 28th of February towards 26th of April 2023. 11 clubs, 22 players. We will have 55 matches, and every single time in a matchup we're going to have 3 games each. And then we're going to have our playoffs, for which I really cannot do. लाइक अभी से कुछ भी कहना बहुत टफ है कि कौन कौन रहने वाला है प्लेऑफ्स के अंदर. बट 6 to 14 मई तक का होने वाला है ये प्लेऑफ्स, जिसपे 6 क्लब्स हम लोग को क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे विद 12 प्लेयर्स. एंड आखिर में जो कि होने वाला है प्ले-इन्स, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन जाने वाले हैं आगे फीफा EU वर्ल्ड कप 2023 पे, क्योंकि जो विनर होंगे उनको इधर मौका मिलेगा अपने नेशन को और अपने क्लब को इधर कहने के रिप्रेजेंट करने का. सो चलिए नजर डालेंगे इधर कुछ देर के अंदर प्राइस पूल के ऊपर. बट फिक्सेस, व्हाट डू यू थिंक, कल के मैच को देखने के बाद आज जैसे कि चेन्नई का मैच है, सो क्या उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है? Well, I mean, only time will tell. But before that, let's talk about the elephant in the room. The prize pool of 30 lakh rupees, TT, we're talking about. And the first position, they're going to get 4.5 lakh rupees. The second followed by with 2 lakhs. And the third and fourth will be, taking 75,000 each. And now, since you're talking about the match of Chennai and FC, let's take a look at the schedule of the 3 matches that we have lined up today. And the first one is, of course, going to be a banger. It is going to be FC Goa taking on Kerala Blasters FC. I mean, all these players are really close to my heart. I love them to bits. And then you've got match 5, Odisha FC taking on ATK Mohan Bagan. Now, this is where I think, I'm an Odisha FC fan, certainly because I belong from Bhubaneswar. But we'll talk about that later, because the match number 6 we have is Hyderabad FC against Chennai FC. So Chennai FC will be playing the second matchup today, but it is not going to be easy because it's Genesis and Varsity we're talking about. We'll talk about the history in a wee while, but now let's take a look at the first matchup that we were talking about, right? FC Goa going up against Kerala Blasters FC. This is it, ladies and gentlemen. Vanshaj Sharma versus Lokmani. Of course, he's changed his IGN and spitting truths of life. Love is evil. And his teammate, of course, is going to be Adi Zima, who has apparently recently just taken over coaching duties in a different organization, which I'm not allowed to mention. But his opponent is going to be our star from Mumbai, Shubham Tam Tam Tam. So, these players are really vocal, especially Kerala Blasters FC. I would love to have a chat with them later on. And but when it talks about speaking by their in-game prowess, this is where Vanshaj has been in a very scintillating form lately. And last time we did see, they went really close, and he had gone through a really rough phase that time. But the comeback, and
Early on he started off with the longer hairs in season one, and then we had that haircut puff. Moment he got his haircut done and he was looking all sharp and trim, that is when his A game suddenly came in, and FC Goa started winning games after games and went into the playoffs. And that was a whole different story. But it is an exciting new season. This time, he is not accompanied by Afnan, who is apparently playing for a different club. But now he does, of course, have his teammate over here, Adi Zima. Now, he was one of the spearheads of Hyderabad FC's attack last season. This time, playing from FC Goa, you would expect this team to be the ones to watch out for heading into the playoffs this time. फॉर श्योर लेट्स सी लाइक किस तरीके से वो आगे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज उनका पहला गेम है एंड फर्स्ट गेम के ऊपर टेंशन फिर प्रेशर वो भी कहीं ना कहीं रहता है. सो देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड पे भी हम लोगों को लोकमान्य जैसे एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी तरफ से अगर बात किया जाए हम लोगों ने बहुत अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस एंड बेहतरीन गेम्स देखे हैं. उनके पास वो कहीं ना कहीं रहता है कि कुछ अलग करके जाएंगे, मतलब अगर वो प्रेशर में भी आ जाते हैं फिर उसके बाद भी वो कुछ ऐसे टैक्टिकल जो चेंजेस है वो करते हैं, फ्रेश लेग्स लेके आते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेशन में चेंजेस होता है, उसके बाद वो होता है ना कि सॉल्यूशन वो जरूर निकाल लेते हैं. एंड उन्हीं के साथ रहने वाले हैं शुभम, जिनको मैंने तो बहुत बार देखे हैं बाकी टूर्नामेंट्स के अंदर. सो उनका भी अगर गेम की बात किया जाए तो वो सेंट्रली ग्राउंड के अंदर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. सो उनको सेंट्रल वे पे हराना तो बहुत टफ है. आई थिंक अगर उनके ऊपर साइड से थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं विंग के ऊपर से अटैक किया जाए तब उनका डिफेंस हल्का फुल्का डगमगाहट के साथ देखने के लिए मिलता है. बट आई थिंक वो ये सब कुछ को जो है वो कहने की जो है फिक्स करके आए होंगे, क्योंकि अभी ये है eISL सीजन 2. अगर आप जीते हो तो आपको मौका मिलेगा अपने कंट्री को, अपने क्लब को रिप्रेजेंट करने का ऑन वर्ल्ड लेवल. एंड उसी के साथ प्राइस पूल तो है ही, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. Yeah, and now that you're mentioning Shubham, I still remember. I think during season one, it's been over a year, but I'm pretty amused, rather surprised that my memory is still strong, considering I'm going bald and getting old. Because Shubham, if I remember, he used to have one of the biggest win streaks. He hadn't lost a game in the ISL for a really long time. So now he would want to carry it forward, and his teammate Lokman, right? This last time he was facing some issues, priorly concerning to the consoles, right? He was not really adept with the PS4 ones because everybody had shifted on PlayStation 5, and this time his qualms have been solved. Right now we've got the next gen consoles, we've got FIFA 23 playing in that, and he has been grinding in and throughout. And as you know, Lokmanu needs no introduction, one of the veterans of the FIFA community. But the matchup against Pankaj is going to be really difficult because, to be honest, I really cannot predict. Could be slightly Pankaj favored, but you can never put Lokmanu out of the equation because he's got some really amazing tactics coming. And witnessed, the formations of all these players mostly resorting to 4-3-2-1. Let's see if they're gonna make any on-the-go flyer changes. या एंड देखना होगा लाइक वो क्या चेंजेस करते हैं. बाय द वे आई थिंक शुरुआत से ही जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है उनके प्लेइंग 11 के ऊपर, जो कि हम लोग देख रहे थे थोड़ा बहुत सिमिलर था हर एक का टीम की तरफ से. एंड आज मुझे लगता है कि हल्का फुल्का चेंजेस हो भी सकता है, अगर मतलब होना चाहे तो उस टाइम पे हम लोग को मिडफील्ड के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस आता हुआ दिख सकता है अगर उनको चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको कल यूज़ नहीं किया गया था, जिनको यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि नेमार को हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार देखा था. नेमार के पास जो वो स्किल्स है लाइक मेनली ड्रिबलिंग एंड ऑल, उसके साथ आप सेंट्रल गेम जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खेल सकते हो. लेकिन जिस तरीके के कार्ड्स ऑलरेडी मौजूद है लाइक मार्केट के अंदर, उसके बाद बाकी के कार्ड्स के तरफ जाना मुझे लगता है टफ है थोड़ा. बट आई थिंक एक सुपर सब की तरह यूज किया जा सकता है नेमार को भी, फिर विनीशियस जूनियर को भी हम लोगों ने एक बार देखा था कल. Enough chit chat, TT, because I think it's game time and let's directly head inside the game. And no surprises over here. And clearly you can see that all the meta cards are in display. We've got FC Goa Vanshaj going in from left to right in their signature orange, and then we've got Kerala Blasters FC in their away kit in that black from right to left. That is going to be
Lokmanu. So this time, Vanshaj has made sure that he's not going to keep any longer hairs, and right off the bat, he's on that attack with Ronaldinho, giving it up towards Bellingham with Mbappe. That's a beautiful step over that he went towards, but Virgil van Dijk for Lokmanu, really alert and patient, making sure that was spotted off right then and there. बट विद दिस टीम आई थिंक इधर थोड़ा स्लो डाउन करके खेलने की ज़रूरत है एंड जितना ज़्यादा स्लो डाउन करेंगे जितना ज़्यादा पोजीशन रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर हो सकता है एज ऑफ नाउ मैंने फुल्ली कंट्रोल रखते हुए अपने पास बॉल के एंड कोशिश कर रही है कि वो गैप ढूंढेगी इसी वजह से राइट लेफ्ट 1-2 करते हुए एलीट एंड बेलिंगम के बीच में लेकिन इंटरसेप्ट हुआ एंड एक बार फिर से अटैक पे जाते हुए दिखेंगे इधर एसी गोवा हकीमी रन निकालते हुए बेलिंगम टू कलीद से फिर से बेलिंगम देखिए फिर से सेम एरिया पे पर इस बार पास निकालने में सफल जरूर हुए थे क्या ये वो मौका है बेहतरीन सेव के साथ इस बार के लिए तो बचा केरला ब्लास्टर्स एफसी को Yeah, sort of has been a boxy start for both these players, just playing box to box and making sure they get their passes right. And towards the end, just go with that final dribble, and then go in for the score. Right, that has been the intention of both these players, and being really calm with their approach, steady and getting not too impatient. But back-to-back corners over here for Vanshaj, who is trying to look for that opening with Ruud Gullit. It try to still keep the possession, does have it though, but look at Lokman. He is so alarmed, not overextending, not really going in for those aggressive tackles out there. Could find an opening and could take the shot, but very rarely you do witness Mbappe missing shots like that from that angle, but it has happened. Yeah, it was too dangerous for Lukaku, but I don't know how कि उन्होंने इतना जगह दे दिया एम्बापे को एंट्री लेने के लिए अपने डिफेंस के अंदर सो ये बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा ग्लोरियस सा मोमेंट बन सकता था अगर ये गोल के ऊपर रख बट चीज़ नहीं हुआ एज ऑफ नाउ थियो हर्नांडेज के पास बॉल कलीत इधर फिर से एक बार देखे आगे निकलते हुए दिख रहे थे बट वैसा मौका इधर बना नहीं लेट्स सी इसके बाद और क्या अटैक बना पाते हैं क्योंकि लोकमेन्यू की अगर बात किया जाए वो कोशिश उनकी तरफ से बैक टू बैक हो रहा है बट फाइनल थर्ड के अंदर एंट्री उनका अभी तक उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाया देखिए फिर से मौका लव इज यू वो इधर गोल मारने की कोशिश जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं लेकिन पहला जो वो मौका था एम्बाप्पे के साथ वो अगर कन्वर्ट कर लेते तो अभी 1-0 हो सकता था बहुत अच्छा मौका था वो Yeah, I think Vanshaj has been looking more clinical with his attacks. It's just that finisher that he has to work upon. And right now, both these players are kind of playing that similar style of FIFA. Trying to play box to box, just keep the passing game on, just look for that one good passing lane and then maybe go for a through and then with a skill move, try and finish this off. Exactly what Lokmanu intended. Went in through. But the defender was right over there. Somehow managed to retrieve the possession, but eventually just lost it away. And yeah, of course, I mean, all the defenders, all the players mostly had just come behind. So not a lot of attacking options were available. So Vanshaj had to delay it a bit, make sure that, the players are spread out and then try and force out an attack. Also trying to use his fullbacks over here on that overlapping run. Did try to get Theo Hernandez, but to no avail. Has been well read by Lokmanu, and now Lokmanu gets his go. Yeah, but एक चीज़ आप इधर ज़रूर देख सकते हैं कि थियो हर्नांडेज से ही जितने सारे अटैक आगे बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट विंग या फिर फुल बैक्स के थ्रू लेफ्ट फुल बैक जो कि थियो हर्नांडेज है उनके थ्रू ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है एक बार फिर से रोनाल्डो हर्नांडेज ऑलरेडी आगे एडवांस कर चुके थे बीच में एक खाली एरिया जरूर है पास देंगे कि नहीं वो देखना होगा रोनाल्डिनियो सही मोमेंट पे वर्जिल वैन डाइक का आया एक बेहतरीन इंटरसेप्शन जिसके थ्रू फिलहाल के बॉल कंट्रोल जा चुका है एफसी गोवा के पास एफसी गोवा अभी तक बहुत सारे अटैक बिल्ड कर चुके हैं बट कन्वर्जन रेट उतना कुछ खास है नहीं
एंड शुड एक्यूरेसी अगर इंक्रीज हो जाए तो आई थिंक और भी ज़्यादा क्लिनिकल होते हुए सकते हैं को. Yeah, I think Vanshaj has been the one who's taken shots on goal, right? And yeah, he could just look for that one sliver of opening and would want to capitalize. But Lokmanyu, I think this is where their experience really settles in. These two players have played against each other so many times that they know what the opposition is exactly going to do. And there you go, trying to switch the sides of play. And then again, we are back with the passing spree going on, just trying to shuffle across the players. Can do the same thing, try to find that one good pass, and there you go, cross coming in. This could be really nice, but no, read like an open book. But with Mbappe, was that an Oh, offside? Yes, indeed. yeah, this was offside, but आई थिंक एक बहुत ही अच्छा मूव इधर क्रिएट किया जा रहा था. थोड़े बहुत पासिंग टाइमिंग के लिए ये ऑफ साइड होता हुआ दिखा, नहीं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता था. हालांकि हाफ टाइम होने में 1 मिनट का और है एट टाइम दिया गया था. इस बार शॉट नॉट दैट गुड कि वो वैंडरसार को पार कर पाए. Yeah, I think I like what Vanshaj is doing. He's taking attempts at going for the shots, not overthinking those ball rolls coming in, and that green time shot is going to be enough to get that one goal on board for the Gors, and they are ahead just when that halftime whistle blows. And there you can see the frustration out of Lokmanyu. He knew exactly that that should not have gone in, could have defended it a little bit better, but Vanshaj finally, figuring out a little bit of a crack over there and capitalizing on it. And there we go to halftime with Lokmanyu to contemplate what he needs to do to get the job done. And Vanshaj, he is already starting to feel himself. And yeah, of course, seems to have a little bit of a chatter with his coach maybe, and getting everything analyzed before he gets on and through, and would want to seal the game. Reed and Vanshaj exactly understanding that he's got some space to take a shot. Look at that. Look at that area of opening that he had gotten over there, and that is all he needed to score one through. And finally, the defenses of Kerala Blaster FC collapsing and giving FC Goa that beautiful lead. Yeah, and if you look at the stats, इधर आप देख सकते हैं कि शॉट्स जो है वो चारों के चारों लिया गया है एफसी गोवा की तरफ से ही. ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से एक भी शॉट्स अभी तक नहीं लिए गए हैं. पोजीशन हालांकि इनके पास 46% थे, बट उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला. पोजीशन आपको मैच नहीं जिता सकता. आपको शॉट्स लेने होंगे, आपको गोल स्कोर करना होगा. तो प्रेशर फुली बना हुआ है अभी केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर. शुरुआती टाइम पे लग रहा था कि लोकेमेंडू थोड़ा ज़्यादा प्रेशर या फिर फुल ऑन पुश करने के मूड पे थे, बट उसके बाद से जिस तरीके से एक कमबैक सा आया एफसी गोवा की तरफ से, वंशज की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने के लिए मिला. एंड वो भी कंटिन्यू देखने के लिए मिल रहा है. सो ये नेक्स्ट हाफ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लोकेमेंडू के लिए कि वो बाय एनी हाउ एक गोल निकाले, क्योंकि अगर वो इधर से गोल नहीं निकाल पाएंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा उनको. Yeah, again, Lukmanyu is back on his attack, and this time he wants to keep majority of the possession. Maybe force out Vanshaj in trying to, go for maybe an aggressive tackle and then try and punish him. But the style of play so far hasn't really changed for Lokmanyu. He's still looking for those areas, still looking for those right passes. Maybe that little opening could, use ball roll a little and get that extra passing lane. But look at Vanshaj. I think this could be a shot on goal. No! And there you go. Did not even need to green time that one. A defensive collapse again coming in. The read not being there from Lokmanyu, and Vanshaj heavily punishing him. And now, it's 2-0 up, and Lokmanyu knows that it is going to be an arduous task for him to climb back again, to start off with a goal of his own. But we're still waiting for that to happen, as Lokmanyu is back again on his attack just to get stolen off from the ball. Yeah, but if you look at FC Goa's attack, then आप देख सकते हो कि जब वो अटैक में जा रहे हैं, 3-3, 4-4 प्लेयर्स एक साथ रन लगाते हुए. Oh no way! Oh my God, what a form! किस तरीके से इधर खेल रहे हैं देखिए एक बार FC गोवा.
3-0 ऑलरेडी हो चुका है एंड सेकंड हाफ हमारे नाइटमेयर बन चुके हैं इधर केरला ब्लास्टर एससी के लिए एंड इधर मेन चीज जो कि मुझे लग रहा है जो कि लोग मेनू नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो है एक गैप जब भी अटैकिंग थर्ड पे जा रहे हैं या फिर जब लो ब्लॉक पे चले जा रहे हैं एफसी गोवा उस टाइम पे गलीत एंड लाइक उसी जगह पे बेलिंगम इन दोनों के बीच में से जो गैप है वो नहीं ढूंढ पा रहे एंड अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि वो एम्बापे या फिर रोनाल्डो को खिला पाया है पास क्योंकि उधर खलीद एंड उसी के साथ साथ हम लोग को बेलिंगम होल्ड करते हुए दिख रहे हैं पिछले बार भी मेसी को पास दिए थे जिधर से बॉल छीन लिया गया उनको एंड उसी जगह से काउंटर अटैक बन गया था एंड उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि एक गोल पे जाके खत्म हुआ सो ओवरऑल आई थिंक थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस जो है वो देने की जरूरत है उनके प्लेयर्स के उनके फुल बैक्स को मेनली क्योंकि उनके फुल बैक्स अगर ज्यादा ही आगे एडवांस कर जाएंगे फिर उनके लिए वापस जाना फिर से टैकल फ्रॉम द साइड ऑफ बेलिंगम एंड उसी के साथ एक बार ये मौका जरूर मिला है इसको कन्वर्ट करना ही होगा बाय एनी हाउ मेसी लेकिन नहीं कर पाए थोड़ा ज्यादा टाइम इधर बॉल के ऊपर बिता लिए इसके वजह से उनको शॉट लेने की जरूरत था जो कि लेने में बहुत लेट कर दिया Vanchaj has taken complete control over the game. Now he can start annoying Lokmanu at this point. Just keep the possession, try and force out Lokmanu to get a few players, too many rushing in over at him, and then finding that right pass, utilizing his left back Theo Hernandez, and now would want to give a quick pass towards Ronaldinho, wanted to take that shot, but this time the defender being exactly where he's supposed to be at, and this could be a good chance, a very good run coming in, and Mbappe does receive it, but the touch was a little heavy, and Lucio being there to intercept. A good driven through pass, but the execution just not being right, and had the ball got a little bit ahead, just cutting through the defender. I could see that 3-1 there, but that's for maybe another day, because the way Vanchaj is going to start annoying Lokmanu at this point, that's gonna hurt a lot. Yeah. And pressure already बहुत ज़्यादा build हो चुका है केरला ब्लास्टर्स के ऊपर एक बार फिर से अटैक पे आते हुए एफसी गोवा रोनाल्डिनियो जिस तरीके से अटैक बनाया नो वे आखिरी मोमेंट एम्बापे का लेकिन एम्बापे को जो वो पास दिए उसके बाद और कुछ करने का मौका ही नहीं था एंड देखिए सेलिब्रेशन देखिए एंड व्हाई नॉट क्यों नहीं करेंगे आप सेलिब्रेट क्योंकि ये आपके सीजन का पहला मैच है और आप जीत रहे हैं 4-0 के साथ this could be just the final nail in the coffin for Lokmanu, and he also knows it. Look at that beautiful step over, those 5-star skill move, Ronaldinho. And, well, step overs, I mean, aren't really difficult. I think you can do that even with a 2-star. But, again, you've got a 5-star skiller, so a little bit of a different animation. And I was just kind of taken aback with Lokmanu's defense being so open, not really taking an effort, and just letting it go through, and the physicality also being present in just retaining the ball over a very simple pass towards Mbappe, and all he had to do was just tap, and it was a goal. Now a 4-0 lead at this point, I mean, it's quite it's quite evident to say that the game is pretty much over, at least now. FC Goa, they're going to win this and take this home. But, for all the Kerala Blasters FC fans out there, do not lose hope, because we still have the co-op game coming up next, and then we've got Shubham's matchup. So that is going to be interesting as well. But right now, Lokmanu just worried. He's got to do something. He's going to go for maybe ultra attacking, just go all in, try to score maybe a 1-2, maybe try and get a few consolation goals, and walk off with his head held high, because this is something that you would not anticipate from a player of his caliber. But Vanchaj was started to just toy around with Lokmanu. The power in the shot was a bit lackey over there, and now Lokmanu's gone for a few changes. I think getting Jarzinho in. Yeah, Messi out and Jarzinho in, but I think it's too late to change. And इधर देखिए ऑलरेडी 4 गोल्स हो चुके हैं, एंड उसके बाद उतना ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला भाई. प्रॉपरली बॉल के ऊपर टाइम बिताते हुए देखेंगे एफसी गोवा क्लियर, एंड या फॉर श्योर बिता रहे थे, बट इस बार एक मौका बीचों बीच से
कंट्रोल आ चुका है लोकोवेनो के पास एंड वो थोड़ा ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं एंड जिस टाइम पे वो थोड़ा आगे एडवांस कर सकते थे बहुत जल्दी क्योंकि एक मूव बन रहा था ओके पहले पहले टू एम्बापे एंड फाइनली फर्स्ट गोल फॉर केरला ब्लास्टर एफसी एंड जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था 4-0 का वो अभी धीरे धीरे करके जो है वो कम जरूर कर सकते हैं बट आई थिंक ये मैच जितना तो बहुत टफ है बट जितने ज़्यादा हो सके वो गोल इधर स्कोर करके जाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस इधर लाइक वापस आता हुआ दिखेगा. Yeah, it's not gonna matter much to Vanshaj at this point. What would Hmm. hurt him is his dreams of keeping a clean sheet. Maybe he had been phenomenal on his defense. Finally, those changes working in for Lokman, getting that little extra bit of pace and getting the buses right this time. And could be a second one, but no, this time Vanshaj a little too alert. And now all he's gonna do is try and maybe score his fifth one. A good pass towards Messi. And now a little bit of a build-up over here by Rude Hullet. It's really difficult to try and steal the ball once you're on him. And now Oh. look at those moves and look at that opening area for Mbappe. So much space. What on earth was his defense doing? And could have possibly been a goal. And courtesy to Van der Sar went in and made a good save. Either ways has been a humiliating defeat for Lokman, to be honest, because a player of his caliber losing 4-1. I thought this would be a really close matchup, and Vanshaj giving a really bold statement out here in his first matchup that he is directly aiming for that trophy, for that championship, and he is going to settle with nothing less than the crown on his head. And if Charanjot is watching out, he knows exactly whom to beat right now because Vanshaj, he has been sublime in this game. फॉर श्योर एंड जिस तरीके से वंशज इधर अपना परफॉर्मेंस अभी तक दिखाया आई थिंक इधर लोकोमोटिव के जो डिफेंस थे उसके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग को इधर निकल के आता हुआ देखने के लिए मिला क्योंकि इनके जो डिफेंस है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड एक साथ जो एक बिल्डअप होता है वो उतना कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं था जिसके बीच में से बहुत सारे मौके मिले एंड जो टैकल्स है वो नहीं देखा सो सब मिला के ओवरऑल अगर बात किया जाए तो या आई थिंक लोकोमोटिव को थोड़ा अपने डिफेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड विद दैट अटैकिंग थर्ड में लाइक अटैकिंग थर्ड पे अगर बात किया जाए उस एरिया पे जाके आप पास जो खिला रहे हो वो पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पासिंग ऑप्शंस उनको मिल नहीं रहे थे क्योंकि बीच में हम लोग रोडली थे एंड उसी के साथ बेलिंगम होल्ड करते हुए दिख रहे थे फ्रॉम द साइड ऑफ एफसी गोवा सो मौके नहीं बने बट आज के दिन का जो पहला मैच है शुरुआत हुआ है एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग शेड के साथ एक तरफ एफसी गोवा विथ 4 ऑन द हैंड हम लोग को केरला ब्लास्टर एफसी देखने के लिए मिला एक गोल के साथ सो प्रेशर बहुत ज़्यादा है केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर क्योंकि कोऑप मैच में बाय एनी हाउ उनको इधर से मैच को जीतना होगा एंड या फिर ड्रॉ अगर करेंगे तो हम लोग तीसरे मैच तक जा सकते हैं बट ड्रॉ एटलीस्ट इधर निकालने की ज़रूरत है It's going to be really difficult because, again, you've got Shubham who is going to be under heavy duress. And at the same time, you have to understand his opponent is Adi Zima. And we know his caliber, what he's made of. And recently, like we discussed, he's taken up some coaching duties. And he was one of those players who also unlocked, in fact, unpacked the TOTY Van Dijk. Lucky guy, I must say. But regardless, game number 2 is going to be a co-op one, and FC Goa's one of the strongest points in during the eISL season 1 was their co-op game, especially between Vanshaj and Afnan. But this time you've got Adi Zima coming in, so we've got to see how the chemistry works between these two players. But for Lokmanu, he has to go for a hard mental reset because he knows he's made those defensive lapses of which he was punished. And now he's got to watch out. He's got to synchronize those plays. And there's still a possibility for Kerala Blasters FC to win this tie-up. All they've got to do is win the next 2 games. Easy peasy. Yeah, but this is not that easy. By the way, जिस तरीके से शुरुआत हम लोगों को दिखा एंड
देखिए इधर मुझे लगता है कि को-ऑप के अंदर जाके जब हम लोग को शिवम जॉइन इन करते हुए दिखेंगे लोकोमेनो के साथ, तो डिफेंसिव जो प्रॉब्लम्स थे वो मे बी इधर क्लियर होते हुए देखने के लिए मिल जाए। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग जब देखेंगे इधर आदि सीमा को, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी कोचिंग भी थोड़ा बहुत कर रही है, सो उस एरिया में मुझे लगता है कि वो टेक्निकल चीज़ें एंड एनालिसिस जो है वो भी हम लोगों को बहुत सारा गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि उनके पास एक एक्स्ट्रा कहीं न कहीं हो सकता है कि एडवांटेज देके जाए इस को-ऑप गेम के अंदर। सो लेट्स से लाइक ये एक बार गेम के अंदर हम लोग जंपिंग करेंगे देन पता चलेगा। बट जो शुरुआत है एफसी गोवा के फैन्स भी अगर बात किया जाए, फिर उनके प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि 4-1 के साथ सीज़न 2 की शुरुआत eISL, सो इससे बेहतरीन चीज़ और क्या ही हो सकता है। बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 3 है। सो आपको पहला मैच तो आप जीत चुके हो, बट इसके बाद जो 2 मैचेस है उसमें से एक और कम से कम जीतने की ज़रूरत है, अगर आपको पॉइंट्स निकाल के लेके जाने हैं इस मैच से। I'll tell you what's even easier. That is FC Goa just winning this co-op game and sealing everything off. हुँ, Because no matter what happens in game number 3, the result is not going to change the outcome of this particular tie. So if FC Goa walk off with a victory in the co-op game, the 3 points, they're going to clearly get it. And that would be a really nice statement given away by the players, and could possibly happen because now I'm pretty sure Lokmanu, he has to just calm and settle down his nerves, get over what happened and how badly Vansha just clapped him out there, and this was clearly not expected. Even from the players that are watching from the community, everybody thought that it is going to be a close tie. But that was not the case. Even personally, I felt, because these are two veterans of the community, have been playing FIFA for quite a long time. But, since me just being a little bit more attached to the community this time and, hearing all those gossips, so everybody was like, Fixis, you need to watch out for Punchurch. He is in a hot form right now, and I clearly understand why. He's not been streaming his games, and if I were Vanchaj, I'd start streaming because then a lot of people would watch him, and of course a little bit more fandom, and we get to learn from how good he's been playing. So of course that is there, and that kept aside. Now, talking more about the game, it was kind of end to end in the start till I think the 30 to 35 yeah. minute marker, and even till the 45 minute marker. Lokmanu had been looking really tight on his defense, but the moment he conceded that first goal, that sort of opened the floodgates to the remainder of the three, because that just kept on coming. Like mistakes after mistakes were kept being made by him, and Vanchaj was smart enough to punish him every Yeah. single time. बट आई थिंक जिस तरीके का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं लोग मैंने, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि प्रेशर की वजह से ये अचानक से जो है उनके डिफेंस फुल्ली टूट गया होगा। आई थिंक मुझे लगता है इधर वंशज शायद समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ब्रेक करना है लोगों मैंने के डिफेंस को। एंड मेनली अगर बात करते हैं, इधर लोगों मैंने बार बार अटैक में जा रहे थे, लेकिन जो उनका फाइनल आउटकम है वो उनको मिल नहीं रहा था, कन्वर्जन नहीं मिल रहा था। एंड उसी जगह पे जब बॉल चला जा रहा था वंश के पास, वो 2 बार के लिए भी नहीं सोच रहे थे, डायरेक्ट काउंटर अटैक पे जा रहे थे। दैट्स व्हाई इधर मुझे लगता है कि डिफेंस जो है इतना ज़्यादा हम लोगों को जो है वो खुलता हुआ दिख रहा था लोकेमेनु की तरफ से, जो कि लोकेमेनु नहीं कर पाए थे। क्योंकि बीच में 2-3 मौके उनको भी मिला था, बट थोड़ा-सा ज़्यादा बॉल के ऊपर होल्ड करने को या फिर मिडफील्ड पे ज़्यादा टाइम देता ना, वो उनको जो है वो गोल स्कोर करने में या फिर थोड़ा लेट करा दिया। दैट्स व्हाई उस टाइम पे डिफेंस जो है वो बहुत इजीली आ चुका था इसी गोवा का। बट बात करते ही करते शुरू हो चुका है को गेम, एंड ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केरला ब्लास्टर एफसी के लिए। उनको ये मैच को जीतना ही जीतना होगा, क्योंकि पहले मैच का रिजल्ट उनके हित में नहीं था। Yeah, absolutely. And FC Goa again from that left to right in their home kit in orange have already begun with an attack. Could have possibly maybe attempted a little bit of a cutback, but this time Kerala Blaster FC being really alert and vigilant in their defensive plays. And there you have a lot of room and space for Beckham. Finally, we get to see Beckham coming in, so we're going to be Yeah. anticipating those, long passes being made, and I think this all boils down to Adi Zima's strats maybe, because I had not seen Vanshaj using the TOTY icon Beckham, but let's see how they're gonna put him into more good use. And
केरला ब्लास्टर्स को मेक श्योर करना होगा कि वो कोई भी डेंजरस सिचुएशन पे कोई सेट पीस ना दे दे, क्योंकि बेकहम जब है तो वो सेट पीसेस पे कुछ भी करके दिखा सकते हैं। सो थोड़ा सा इधर देख के खेलना होगा। बट केरला ब्लास्टर एफसी एज ऑफ नाउ लुकिमेनु एंड शिवम राइट विंग के ऊपर प्रॉपर्ली पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। बॉल कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, बट इस एरिया से कोई भी गलती उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि डिफेंस पे ज्यादा प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं है। बट थियो हर्नांडेज लेफ्ट विंग से रन निकालते हुए एंड बॉक्स के अंदर रेडी ले चुके हैं, बट सही टाइम पे आया एक इंटरसेप्शन, जिसके थ्रू फिलहाल के लिए कॉर्नर तो हुआ, बट शॉर्ट कॉर्नर। रोनाल्डिनियो डांसिंग विद द बॉल, बट फाइनली लूसियो, रोनाल्डिनियो, एम्बापे, ओपनिंग नहीं मिल रहा एक बार फिर से। Oh, but this could be a good one, and directly took the shot, did not even receive it, and everybody would have done the same. But again, the goalkeeper coming in for the rescue went out for a corner. But now Kerala Blasters FC, I think they've been looking really promising with how they've started. Finally, starting to take a few shots on goal, and eventually there's going to be a point where it lands at the back of the net. But at this point, oh, Theo Hernandez really being physical over there. I really thought for a moment that went out, but Hakimi successfully managing to keep it in. एंड किमी वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक इन द गेम। ऑब्वियसली उनकी तरफ से ये तो एक्सपेक्टेशन रहता ही है, विद स्पीड विद फिजिक। बट देखिए इस बार एक बार फिर से ऐसे गोवा ने लीड के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। इधर अगर बात किया जाए लेफ्ट से एम्बापे, रोनाल्डो, मौका बन सकता है। रोनाल्डिनियो मौजूद थे विद पोजीशन ऑफ सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड, बट उस एरिया पे उनके पास बॉल जाने से पहले इधर वर्जिल वैन डाइक का बॉल छीन लिया। एंड केरला ब्लास्टर एफसी फिर से बॉल कंट्रोल रखने में अभी के लिए तो सफल हो रहे, बट जो अटैक है उसको कन्वर्ट भी करना होगा। पहला गोल इधर आना चाहिए केरला ब्लास्टर की तरफ से, तब कुछ बन सकता है मौका, और एल्स नहीं तो प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। This is good coming in from KBFC, right? Keeping a lot of possession, constantly switching sides of play, trying to, just force the players of FC Goa to make a wrong move. Maybe one, player not being there at the right position, and then just punishing him over there. And there you go. Not really hesitating in going in for those tackles in those moments. It's fine. They can deal with the corner again for a short one. Is what Kerala Blasters FC have opted for. With Bellingham finally goes for that Trivela, but the power and the angle just not being present over there, and as a result of which, well, did not reach its mark. क्या अभी ट्रेवेला हम लोग बहुत बार देखे हैं, कुछ माइंड ब्लोइंग गोल्स होते हुए। सो मुझे लगा था एक बार के लिए शायद ये नेट्स पे चले जाए, बट नहीं। वांडे सार मौजूद ऑब्वियसली है, तो उनको वेट करना उतना इजी नहीं होगा। बट इस बार के लिए हकीमी टू एम्बापे फुल्ली इधर विंग को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश था, बट वैन डाइक जब मौजूद है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं रहने वाला एज ऑफ नाउ एफसी गोवा। बट इस गेम के अंदर हम लोग एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि एफसी गोवा को उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है केबीएफसी की तरफ से, एंड केरला ब्लास्टर्स वो इसी चीज़ को अभी कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। बेलिंगम टू रोनाल्डिनियो, एंड शायद हम लोगों को फिर से वो कुछ स्किल मूव्स देखने के लिए मिलेंगे। बॉल रोल बैक टू बैक हम लोग होता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी इधर बीच से वो गैप मिला नहीं जिससे कि पास निकाल पाए। And finally, FC Goa getting a little bit of possession right now, and they want to take control with Ronaldinho. I know, this is typical Vanshaj, just trying to play around with the skill move, finally getting an opening. Oh, that missed. I mean, I think maybe had he gone for a finesse shot, could have just curled in or something, but that was clearly not the case. And that is as close FC Goa could have gotten in getting a goal over there, and they would be kicking themselves in the foot at this point, because again Kerala Blasters FC have been looking really promising, looking really good, finally managing to give a good cut back, but no, touch a little too heavy, and Ruud Hullet will be there for that little steal, and now FC Goa, they would start pressing it. Yeah. As of now 40 मिनट्स का गेम ऑलरेडी हो चुका है,
एंड अभी तक तो फर्स्ट हाफ के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल दिखा है केरला ब्लास्टर एससी की तरफ से, बट बीच में जो मौका इधर बना था, Yeah. वो मौके पे वो फिर से एक बार पीछे जा सकते थे बाय द वे, बट अभी भी 0-0। आई डोंट नो हाउ अभी भी 0-0 चल रहा है, क्योंकि वो मौके को कन्वर्ट करना चाहिए था। देखिए पिछले मैच में भी एक ऐसा ही सेम मौका मिला था जिसपे वो गोल में नहीं रख पाए थे, फिर उसके बाद 4 गोल्स बैक टू बैक आता हुआ देखने के लिए मिला एफसी गोवा की तरफ से। तो इस बार क्या होगा वो देखना होगा। बाय द वे 44 मिनट्स हो चुके हैं, शायद हम लोग को एडेड टाइम 1 मिनट का मिलता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, और एल्स लेट्स सी। मेसी टू बेलिंगम, एम्बापे, केरला ब्लास्टर जो कि फर्स्ट हाफ के बाद एक गोल के लीड के साथ रहेंगे, बट नहीं, इधर अभी भी मौका नहीं मिलता एंड शायद नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा एंड 0-0 स्कोर लाइन के साथ, तो बहुत क्लोज गया। फाइनली मुझे लगता है कि केरला ब्लास्टर्स को-ऑप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक। Yeah, I think no doubt about that. And you could clearly see the possession that they've retained, right? 57%. And I think if you talk about the first 30 minutes, I would say it was more than 60% for that, for them. And then we could see FC Goa getting a little bit of, that possession game back. But there were a few chances this time that Kerala Blasters FC had, tried to create. And they're not really shying away from taking these, long-range Trivela shots. But Bellingham did find some room over there, and with that TOTY card, you would, really not shy away from taking your chances. But that clearly wasn't the case, and FC Goa had gotten really close in that moment where they took that shot with Mbappe with his, I think, weak foot. But suddenly, it decided to just, go through or just go beside the far post over there, and they would be cussing themselves over there because that was a beautiful shot. But as things stand, Kerala Blasters FC are looking really good in the first half. In the second half, they've got to make a few tweaks and changes. But there were those moments, those small moments where, FC Goa, that shot from Mbappe, there was that little defensive lapse also being quite visible from the side of Kerala Blasters FC. या एंड विद स्टैट्स आई थिंक इधर थोड़ा लेफ्ट विंग के ऊपर और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेफ्ट विंग पे ज़्यादा बॉल्स इधर जीत नहीं पाए थे अभी तक। अगर देखा जाए केरला ब्लास्टर एफसी, सो दे नीड की उस जगह पे प्लेयर्स को और भी ज़्यादा ओवरलोड करे। बाय द वे फुल बैक्स के साथ इधर परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लूसियो टू वेंडाक एंड दे इधर हकीमी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। शुरुआत से ही हम लोग देख पा रहे थे जब वो सिचुएशन अलग था, तब राइट टू लेफ्ट अटैक कर रहे थे केरला ब्लास्टर एफसी। सो हम लोग को स्क्रीन के दूसरे तरफ बहुत ज़्यादा अटैक बनता हुआ दिख रहा था विद हकीमी एंड रोनाल्डिनियो, एंड सेम थिंग फिर से चालू होता हुआ। बॉल छीना जाएगा, बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे बॉल विन किया गया फ्रॉम द साइड ऑफ केरला ब्लास्टर्स, बट नहीं, उस जगह पे आएगा एक इंटरसेप्शन एंड थ्रो इन मिल जाएगा इधर एसी गोवा को। अब केरला ब्लास्टर Plus the rest of the attackers also, they had not really made that move, right? Did not have a lot of options, had to buy some time over there, went in for that ball roll, tried to create that extra little space, but this looks really promising. Ronaldinho, beautiful pass towards Mbappe with Bellingham and a step over coming in, but nothing really passes through Ruud Gullit. And the only person that could go get through Ruud Gullit at this point was indeed Ruud Gullit. And now again, FC Goa, they went in for trying to build up their play. Been looking a little shabby this time, deciding, however, to change the sides of play and being a little bit more calm, more patient, just trying, again to search for that one good pass. That is how they've been keeping it. Not too complicating stuff. Just keep it simple, basic. Look for that passing game. Find that one good through pass. Or maybe just lob it across. We haven't seen a lot of those German crosses that we saw a lot yesterday. Not a lot of driven through pass either. And both the players have been relying on those ground through passes. And this looks to be a really golden opportunity with Ronaldinho trying to go in, but Lucio just being present over there to avert the threat. And for now, as things stand after an hour mark, well, both the teams are at level, but I might have to fight back on my words, but seems like FC Goa are not looking to threaten. Yeah,
एज ऑफ नाउ एफसी गोवा अभी तक जो शॉट्स है वो डायरेक्टली रख नहीं पाए थे। Oh, बात कर ही रहे थे बेलिंगम, व्हाट अ पास, व्हाट अ क्रॉस, ओह माय गॉड, ये क्या था, क्या देख लिया हम लोगों ने, एकदम प्रॉपर पोजीशन पे, जिधर कुछ भी अभी तक एफसी गोवा की तरफ से अटैक पे स्ट्रांगली नहीं आ रहा था, उस जगह पे जस्ट एक पास एंड बेलिंगम विद गोल एंड एक बार फिर से 1-0 लीड। ओह माय गॉड। TT, I think we have jinxed it. Just when we were saying that we haven't seen, that church cross coming in, just when Yeah. FC Goa were not looking threatening, suddenly it was an aerial threat, and boom, there was that goal. And now Kerala Blasters FC, they're in the back foot. They need to do something. They need to somehow keep their hopes alive, and for that, they will have to score an equalizer or a possible winner after that equalizer. But FC Goa have no intentions of letting them do so. एंड एफसी गोवा, ओह माय गॉड, ये एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकता है, सिर्फ एक पास खत्म कर सकता था बहुत कुछ, ये लीड को भी, उसी के साथ साथ शायद इस मैच को जीतने का जो मौका है वो भी लाइक कहने के एफसी गोवा के लिए, क्योंकि एफसी गोवा की अगर बात किया जाए, एक ही जर्मन क्रॉस के थ्रू उनका गोल आया है, अदर देन दैट उतना ज्यादा वो क्लिनिकल नहीं थे अपने अटैक पे। बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी, उनको अभी भी वो जो पास है, वो जो बीच Oh, से कुछ गैप्स है वो नहीं मिला था, एंड look at देखिए that यही run. है। या I mean, I'm sorry to cut you off over there, but I loved how Bellingham just made that run right in the end, because some might, would have complained, oh, that could have been offside. But the moment the pass was made, he made that run in and just passed to the defender. And Kerala Blasters FC completely stunned over there, not being able to react to anything at all. And that was a beautiful goal in the blink of an eye. And for now, Kerala Blasters FC, they've got to do something. They have to pull out a rabbit out of their magic hat if they intend on maybe keeping their hopes alive in winning this tie-up. एंड देखिए प्रॉपर पोजीशन मिल ही नहीं रहा था थ्रो इन करने का, बट फाइनली जब R9 आए थे उसके बाद भी उनसे बॉल छीना गया। इस बार कुछ भी सही नहीं हो रहा केरला ब्लास्टर्स के लिए शुरुआत में ही, बट बॉल विन कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो एक मोमेंट पे देखिए इस बार अर्लिंग हaaland फ्रॉम द साइड ऑफ एफसी गोवा रन निकालते हुए लेफ्ट साइड से, बिल्कुल उनको जगह मिलेगा, पास आया रोनाल्डो, बट वैन डे सार द सेवियर, क्योंकि ये जो गैप है वो 2-0 का हो सकता था अगर ये सेव नहीं करते तो। Yeah, I mean, you could see those long strides being taken with an Erling Haaland, right? I mean, that is exactly why a lot of players are bringing him after that 70-minute marker. That pace, and then, that physicality also being there, plus it being a TOTY card, a step over and a shot is all FC Goa needed at this point to seal this through, as Kerala Blasters FC have been completely decimated 6 feet under, and now I do not see them coming back through. They've been played with, and those little defensive openings, and FC Goa ensuring that they needed to capitalize. Look at the stats. Kerala Blasters FC still having a lot of the ball though, but the moment FC Goa get the ball, the kind of quality of plays they created. Initially, we saw them, trying simple things, just go with those 1-2 passes and all that. But now they're playing a little wide. They're not shying away from playing those long passes. They're not hesitating to make those long through passes. And that is exactly how they managed to just pierce through and get another beautiful one going in home. And right now, Kerala Blasters FC on the cusp of just being thrown from the hills that they're standing across. And at this point, well, honestly, TT, I think it's pretty much done and dusted, unless there's a miracle. या एट दिस पॉइंट आई थिंक इधर और कमबैक के चांसेस हैं नहीं, क्योंकि केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से जितने भी अभी तक अटैक बना है उतना ज़्यादा डेंजरस लगा नहीं था, एंड बीच बीच में एफसी गोवा बहुत सारे मौके बना रहे थे, बट वेल उनका जो फ्लैश लाइक काइंड ऑफ जो कार्ड था एंड ऑफ एरा, वो कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
अभी के लिए कितना काम आएगा वी डोंट नो। कंटाइक टू वैंडे सार, ओ माय गॉड, एक और That was close. मुश्किल का सिनेरियो बन सकता था। बट देखिए इधर बहुत सारे मिस पासेस होता हुआ पहले को वो खेल सकते थे। ओह सेम विद एफसी गोवा, बट नहीं, इधर केरला ब्लास्टर को शायद बॉल जो है वो उतना पसंद नहीं आ रहा था। बट इधर देख सकते हैं कि दोनों ही टीम की तरफ से थोड़ा बहुत मेसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हो गया था, जिसके थ्रू बॉल एक बार फिर से एफसी गोवा के पास आ चुका है। Yeah, and now again, they're on the attack. Mbappe, that blistering pace, of course, would look for a pass in for Ronaldinho. A touch too many, maybe, or maybe not. Oh, there you go. Making a really important interception over there. I think it was Jairzinho coming into play. And now, oh, Kerala Blasters FC, just when they wanted to go for a consolation goal. Now, that you were talking about Gareth Bale, right? The end of an era card. That was a Yeah. beautiful super sub card, very hard to link, but as you get in for a substitution, that pace and that finish really helps you out in those moments, in those dying moments, and could be really a game changer. A very he's got that little attacking instinct in him, and tends to go a little fast and tends to go a little ahead and helping the attackers out there. But for now, as things stand, FC Goa, this could have been another chance. A touch that was a little heavy on Erling Haaland, and would be easy for Van der Sar to try and intercept that out. As KBFC, they're on their attack again. And just when I spoke, the final whistle strikes, and there you go. FC Goa done, and well, beautiful win for them. And with that, they seal the series also in their name. Does not matter what the outcome shall be for the third game, because FC Goa, they are cruising through with the 3 points over Kerala Blasters FC. फॉर श्योर। एंड केरल ब्लास्टर एफसी आज के दिन पे उतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं दिखे, उतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं दिखे। आई थिंक उनको ज़रूरत है फिर से एक बार डिस्कशन की, एंड मे बी उनको एक बार फिर से विद पेन एंड पेपर अपने स्टैट्स के ऊपर, अपने टैक्टिक्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो भेद ही नहीं पाया। अगर हम लोग मेनली बात करते हैं इधर एफसी गोवा के डिफेंस को तोड़ने की, वो तोड़ना लाइक वो चीज़ वो नहीं कर पाए थे। एंड जब नहीं हो रहा था एफसी गोवा की तरफ से, तो उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया, एंड विद जर्मन क्रॉस उन्होंने पहला गोल दागा। एंड कहीं ना कहीं उस जगह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, क्योंकि पिछला मैच ऑलरेडी जीत के रखे थे। सो यही चीज़ों की जो कमी है वो हम लोग को केरल ब्लास्टर एफसी की तरफ से देखने के लिए मिला, कि वो कुछ भी अलग नहीं कर रहे थे, वो सेम टू सेम बार 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 करने की कोशिश था। एंड उनके जो फॉर्मेशन थे मेनली, उस फॉर्मेशन वाइज उनके जो फुल बैक्स है वो बहुत कम टाइम ही हम लोग को इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा था। एंड अगर हो भी रहे थे तो हकीमी को उनको लेके जाना पड़ रहा था, ऑटोमेटिकली हकीमी जो है वो रन्स नहीं निकल रहे थे। मे बी उनको स्टे बैक का जो एक टैक्टिक है वो दिया गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इसी वजह से भी हो सकता है। बट आई थिंक फुल बैक्स को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड विद मिडफील्ड कंट्रोल एंड पास एक्यूरेसी उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है केरल ब्लास्टर एफसी को। अगर नहीं करेंगे फिर इस तरीके के स्कोर लाइन उनको फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। It's going to be tormenting for Shubham, because all he's going to be playing for is his individual accolades, right? Eventually, maybe, it's going to help him out if they win this game, maybe somewhere down after 26th of April, where, maybe Kerala Blasters FC could be in that tie position for making it to the top 4, and all these extra games that they have won could help them out. But other than that, we know those 3 points have gone in home for FC Goa, who have been nothing short of brilliant today with how they played, right? When we were witnessing Kerala Blasters FC keeping majority of the possession, and they were constantly trying to press in with the attack, the defense looked so solid, because this has been a discussion that has been carried forward from yesterday, because you could see a lot of those defensive lapses amongst those players while playing those co-op games, but it never felt like that while FC Goa were playing, especially on their defense. Everybody, both these players knew exactly what their roles were. They went in for those tackles when needed, were not overextending even for a bit, being really calm and not giving them a lot of opportunities. Kerala Blasters FC, I think, had created that one really good chance with R9 when he just instantly went in for that direct shot. But apart from that, it was all about, Kerala Blasters FC keeping a lot of
possession on them. And then we saw a little bit of a switch up coming around from FC Goa, where they decided to start playing a little through the wide sides, those long passes and then those long through passes, and all those factored in. And that little bit of a change was something that I think both Lokmanu and Shubham did not anticipate, and they were punished because, after conceding that first goal, should have seen the look on their faces, right? They were flabbergasted. They were kind of baffled with what just happened in front of them. And as things stand right now, FC Goa, and for them, it is Adizima right now in orange from left to right. For Kerala Blasters FC will be Shubham from right to left, again left in this situation. One of his major complaints during the eISL season 1 was, I used to always play a game where I've always lost, and even if I won that game, the outcome did not change a lot, and would feel a little sad about being in that same position, especially having such a brilliant teammate like Lokmanu. So of course, Shubham, after tonight, both Lokmanu and Shubham will get back to the drawing board, work on their individual games. Of course, Shubham still has a chance, but for now, we are game on. Yeah, and शिवम आई थिंक जो पिछले मैच के जो प्रॉब्लम्स थे काइंड ऑफ विथ विंग एंड ऑल, वो चीज़ शायद शुभम के लिए एक बार फिर से देखने के लिए मिल सकता है. बट लेट्स सी. ओह नो वे, जिस एरिया पे उनको मिला था बॉल, उनको बैक पास नहीं करना था. वो शायद इधर शॉट ले सकते थे, बट वो नहीं ले पाए. हिट ऑफ द मोमेंट पास दे चुके थे इधर रोनाल्डिनियो को, एंड उस जगह से मौका ज़्यादा बना नहीं. राइट विंग पे इधर हम लोग को ज़िनेडिन ज़िडान आते हुए दिखेंगे. तो ज़िडान फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है eISL सीजन 2 के. बट से बेलिंगम, चार्सिनियो, एम्बापे रन निकाल चुके थे, लेकिन उनके लिए इधर कोई भी ड्रिवन थ्रू देखने के लिए मिला नहीं है. बट लेट्स सी क्या वो होगा कि नहीं. एक डेंजर सिचुएशन बन सकता था, बट सही मोमेंट पे टच आता हुआ देखने के लिए मिला. Good start. It's a good start. So far for Shubham, to be honest, because I really want at this point, of course, being commentators, we are not supposed to have this bias, but then again, you would want Kerala Blasters FC to take something away tonight, right? Of course, FC Goa, they have been lovely. They've managed to secure those 3 points for them, but Shubham would want to have that little bit of an individual confidence that yes, he still put up his A game, did manage to win. And right now, as the pace of the game dictates, Shubham has been really good with his attacks, ain't it? Yeah, and that's why I think इतने ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं ऐसी गोवा के ऊपर. बट वो प्रेशर जो है वो आप तब तक जो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली जब तक कि आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो. फर्स्ट गोल अभी तक हम लोग को आता हुआ नहीं दिखा है. अगर हम लोग बात करें, बार बार चेज किया जा रहा था वो बाहर के लिए, लाइक दोनों ही तरफ से. आई थिंक जो शॉट लेने के टाइम पे वो पास देना सही समझे, एंड दोनों ही साइड से हम लोग को फर्स्ट गोल आता हुआ नहीं देखने के लिए मिला. That little bit of hesitation just coming in, right? Yeah. And I really feel, if these players could just take that shot, and what could happen at the worst case scenario, right? You would get a corner, right? And with now just when we were anticipating that Adi Zima could finally, just end the deadlock and get his goal, Shubham, being really alert, just took Blue Show in, just blocked off that passing lane and managed to get through out. But for now, I mean, FC Goa again back. You could see the fullback trying to take that run over there. I'm pretty sure that has to be Theo Hernandez. But for now, again, Kerala Blasters FC, they have retrieved possession, and let's see what they can make out of this. हाँ, बट वर्जिल वैन डाइक इतना ज़्यादा एडवांस करते हुए नहीं दिखते इस बार के लिए. बॉल थ्रू गया, लेकिन वैन डे सार फाइनली वो आगे आए एंड अपने टीम को इस बार के लिए बचाए, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे थे. ये गोल अगर खाते तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस जो है वो चूर हो सकता था. बट लेट्स सी, अभी भी मौका है इधर एफसी गोवा के पास. Yeah, indeed, and they were looking good up until that pass was made. And there you can see Rude Hullet really stretching in,
just to receive that ball. And finally, you can see those. Oh my goodness! Oh my goodness! This is where he must be cussing. I mean, Bandasa, he does not let loose of the ball like that in situations like that. And Adi Zima just punishing him. And I must say, Shubham was a little bit unlucky over there. But getting back to what I really wanted to speak, and this really was an important part of the play, where Adi Zima, he's relying on those driven through passes, those lob through passes, and constantly trying to just keep one of his players trying to make that run, receive it, and then shoot. And it was, I think, his third attempt, and maybe third time was the charm, and he succeeded. एंड उसी मोमेंट पे आई थिंक इधर जो गोल के अंदर थोड़ा बहुत लकी ज़रूर थे, लेकिन वो आउटफुट टच बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। इस बार के लिए मौका था हकीमी के पास, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। रोडली एंड निकाल चुके हैं लेफ्ट साइड से। इधर आप देख सकते हैं प्रॉपर एडवांस करते हुए थियो हर्नांडेज। वन मोर टाइम, वन मोर गोल, एसी गोवा विद 2-0 लीड। And इधर केरला ब्लास्टर FC, I think आज का दिन उनके लिए नहीं है। Yeah, and now you could see, right, kind of lost his cool over there in that moment. That beautiful run trigger being made by Adi Zima, ensuring that Theo Hernandez just paces through, and then that right pass. It was all a very good and very well synchronized melody, but now with a beautiful answer. Now that maybe just could be the comeback for Shubham at this point, because Kerala Blasters FC just getting in through, and now he just wants that second goal coming in. And this is the point where he just removed his headphone and kept it, and suddenly his focus, his concentration has reached a next level, and he manages to score a goal. या ये मेरे साथ भी होता है। आप अगर बहुत देर तक हेडफोन पहने रहोगे, फिर प्रेशर, वो क्राउड का साउंड भी आपको कभी कभार डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सो इसी वजह से शायद वो अपने हेडफोन्स को नीचे रखें। एंड इस बार उनके परफॉर्मेंस के अंदर जो पॉजिटिवनेस एंड उसी के साथ जो इम्प्रूवमेंट्स है, वो शायद हम लोग को इधर देखने के लिए मिल सकता है। बट इधर आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार 1-2 बेलिंगहम एंड के बीच में एसी गोवा जस्ट ट्राइंग कि वो टाइम बिताए। ओ रोनाल्डो बट सही टाइम पे इधर शील्ड प्रोवाइड करते हुए अपने डिफेंस पे वैन डाइक, एंड इसी वजह से इस बार तो 2-1 के साथ ही खत्म होगा। फर्स्ट हाफ देखते हुए आई थिंक मुझे लगता है कि एफसी गोवा, उनके पास बहुत चांसेस है कि वो इस लीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज करे। बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी, उनको जो ये बीच में थोड़े बहुत टाइम का बफर मिलेगा, इसके अंदर क्या कुछ वो चेंज करेंगे, कोई फ्रेश लेग आएगा कि नहीं, या फिर कोई टैक्टिकल चेंजेस होगा कि नहीं होगा, वो सब कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। बट स्टैट वाइज आई थिंक एफसी गोवा अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है। शॉट एक्यूरेसी एंड विथ पास एक्यूरेसी तो दोनों का ही सेम ही है। बट बीच में ऐसे सिचुएशन में केरला ब्लास्टर गलतियां की हैं पास देने में, उस जगह से उनके लिए डेंजरस सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिएट होता है। Now just look at this, look at how beautifully Kerala Blasters FC and FC Goa's movements have been made, and you can see from the perspective of FC Goa, those runs, from that left side, you could see Theo Hernandez going in every single time. He's wanting to make those plays. Now, given that they had that little bit of a thinking time, Shubham has to figure out a way to somehow close in those those through passes coming in from Adi Zima, because if he can manage to do that and score one more, because one goal lead amounts to nothing at all really, because we even could see just after conceding a goal, Adi Zima was a little bit more cautious. He was going in for those 1-2 passes, and that was it. He was not looking attacking over there. He was feeling under pressure, because had he lost the ball, it could have been a goal in that particular situation. But for now, a little bit shaky FC Goa. They still have the lead though, but Kerala Blasters FC, they are sort of adamant in trying to get back in, and Shubham has got to do whatever it takes to score another one at the very least. And फिर से एक बार Kerala Blaster FC, miss pass, and one more time FC Goa। एक कोशिश था कि वो
थ्रो खिलाए, बट वो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लगा दिए थे। मोस्ट प्रोबेबली इसकी वजह से बॉल चला गया डायरेक्टली गोलकीपर के पास। बट देखिए Wow. क्या शानदार ये पास था रोनाल्डिनियो के लिए, एंड रोनाल्डिनियो उनके पास वो स्किल्स है कि वो इधर थ्रो इन कर जाए अंदर। रोड होली से जार्जिनियो राइट साइड पे, हकीमी ऑलरेडी मौजूद, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा बॉल के ऊपर टाइम बिताने की कोशिश करेंगे एंड वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश फिलहाल के लिए करते हुए केरला ब्लास्टर्स। Yeah, I think Shubham, he's just trying to keep on possession and again, find that one good pass that I've been constantly harping about. Because at that point, I really felt he could have gone for a long pass towards Hakimi in the previous attack, because Hakimi was left unguarded and then could have maybe gotten in and gone for that cutback. But this looks like to be a good run, because once Mbappe beats the defender, it's so difficult to catch up to him. The kind of a pace that this card has is atrocious, and sometimes you feel helpless, especially me when I play those lower division matches, and then I've got the player of the month Mbappe's. But this could be a nice chance, and maybe Shubham anticipated that this could have been an offside, just let the ball go. But had he taken his shot, ये बहुत बहुत बार होता है, वो हमारे साथ भी होता है। कभी कभार लगता है कि शायद ये ऑफसाइड है, बट आई थिंक एक शॉट ले लेना चाहिए था। बट अभी के लिए 2-1 के लीड के साथ एफसी गोवा अभी भी आगे, लेकिन अभी तक कोई भी टीम 3 मैचेस नहीं जीते हैं। कल के दिन पे अगर बात किया जाए बेंगलुरु एफसी की, सो उन्होंने पहला मैच जीता, दूसरा मैच ड्रॉ हुआ मोस्ट प्रोबेबली, एंड तीसरे मैच पे एक बार फिर से हम लोग को जीतते हुए देखने के लिए मिले थे। लेकिन बैक टू बैक 3 मैचेस अभी तक कोई भी क्लब ने नहीं जीता है। हो सकता है कि पहला क्लब हम लोगों को मिल जाए आज एफसी गोवा के नाम से कि वो तीनों के तीनों मैच जीते, क्योंकि अभी तो स्कोर लाइन वही कह रहा है। बट केरला ब्लास्टर्स से उनके पास टाइम है, 64 मिनट्स का गेम हुआ है अभी भी। अगर देखा जाए 27 मिनट्स के आसपास का जो टाइम है विद एडेड टाइम बाकी है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से क्या केरला ब्लास्टर्स इस मैच को जीत पाते हैं कि नहीं। अगर जीतना है तो शुभम को कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना होगा, नहीं तो आधी सीमा को बीट करना उतना ईजी नहीं है। oh yeah, I mean, I could not agree more on that, because I've been liking what Shubham has been doing lately, right? He's been trying, he's been constantly applying that pressure and keeping Adi Zima at bay, right? Not letting him score at least. That could be a small win, and maybe find that one good opportunity and try and equalize. And this was the intent was really nice, but Hakimi, being rock solid over there, did not let the ball pass through towards Ronaldinho. Now this gives Adizima yet another opportunity, and he could have been punished, but the fullbacks are really coming into play for both these teams. But Jarzinho with this run, he has got a lot of options, will directly opt for a shot, curling in through the net, and finally Kerala Blasters FC have managed to equalize. They have been trying this for so long and finally succeeding, and this could be a huge sigh of relief. But he still knows he's got a task at hand. He has to score the winner as well, and this is where FC Goa, they have to go on a little bit of a reset. I mean, Adi Zima is not playing under any pressure. Of course, their team has won this matchup, but on a personal on the personal levels, he would never would want to lose a matchup right now. At least want to keep things clean for FC Goa, winning all their 3 ties. So it all comes down to who's going to score that winner over here. Could be either of them. But with the way Kerala Blasters FC have been playing, how they've been dominating the second half, I think they might just edge it out, or will end in a draw, or maybe a surprise goal coming in from FC Goa. मे बी ये हो सकता है, बट अभी तक अगर देखा जाए टीम केरला ब्लास्टर एससी सेकेंड हाफ के ऊपर बॉल कंट्रोल प्रॉपरली रख पा रहे हैं, एंड जो भी इधर गलतियां थोड़ा बहुत उनकी तरफ से हो भी रहा है उसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन में उनका डिफेंस इस हाफ के अंदर तो एटलीस्ट नहीं फंसा है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, एंड इस बार के लिए मेसी के पास बॉल ऑलरेडी प्ले ऑफ किया गया था रोनाल्डो के ऊपर। सो कहीं ना कहीं इस बार विथ मेसी
मे बी वो जो रन्स है वो निकलता हुआ देखने के लिए मिल जाए। टीम ऑफ द ईयर मेसी के पास तो पेस भी है एंड ड्रिबलिंग तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बट पोजीशन चेंज किया गया, साइड इधर चेंज किया गया एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना सारा साइड चेंज करते हो, आपका ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स हैं, डिफेंडर्स हैं, उनको भी इधर पोजीशन चेंज करना होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है एंड इसी वजह से उसका ही शायद यूज इधर करते हुए केरला ब्लास्टर्स से मेसी के पास बॉल, बट बैक पास किया जाएगा 1-2 करते हुए थियो हर्नांडेज के साथ एंड लेफ्ट साइड से बॉल निकल चुके हैं, क्लोज लेके आएंगे, एक पास एंड इधर गोल हो सकता था, लेकिन सही टाइम पे हकीमी की तरफ से इंटरसेप्ट होता हुआ एंड 2-2 81 मिनट्स का गेम हो चुका है। आखिरी 9 मिनट जो भी गोल दागेंगे, आई थिंक दैट विल बी द विनर। Yeah, I mean, I think at this point, all I can see is just that one goal, and that one goal being the winner of, and in fact, the decider of this game. Or maybe we could see nada, right? At this point, finally, some signs of revival from Adizima. Beautiful cutback towards Erling Haaland, and now he could wait for the shot, but Van der Sar. Oh, the only problem there, what I feel was, Ruud Gullit not green timing it, and. I mean, I do not know what to say at that moment, because even if you don't green time it, and it was not even red time, right? So it was absolutely fine. But Van der Sar just being so good, somewhere Shubham really needs to, just take a moment and get himself back into the game. He knows he wants to win this. He's been creating those chances. Has certainly been the better player in the second half with Mbappe. Wanted to go for the ball roll, but well read by Virgil van Dijk from FC Goa in trying to get, well, a corner at least. Uh, if not a goal, that's a good thing. Just letting you know. But again, a short corner being played and through Messi towards Pele. Let's see in that final attack if Shubham can find something, and the answer is going to be no, as the ball has been put out of play. With that, the final whistle has been blown, and that marks the end of this particular game, where both of them end raw. But this clearly is something that we have already discussed, that FC Goa, no wonder they have won this tie. फॉर श्योर हैंड पहले दो गेम पे ही सब कुछ क्लियर हो गया था कि एफसी गोवा इस पूरे सीरीज को जीत चुके हैं, बट इस गेम के अंदर भी बहुत सारे मौके बनते हुए दिखे थे। देखिए ये जो आउटफुट टच था, वो आउटफुट टच सब कुछ चेंज कर दिया फॉर वैन डे सार एज वेल, क्योंकि वैन डे सार जंप तो किए थे, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि उधर से एक आउट टच आएगा। बट उसके बाद थियो हर्नांडेज विद सेकंड गोल। ये दो गोल के बाद लग नहीं रहा था कि केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से कुछ खास कमबैक आ सकता है, बट जिस तरीके से शिवम ने गेम को टर्न अप किया एंड एम्बापे का वो स्टेप ओवर, फिर ड्रिबल करके आगे जाके जो शॉट था, सब मिला के बहुत बहुत ज्यादा शानदार। लेकिन ये ही फॉर्म इसके पहले लोकोमेंटो की तरफ से भी आना चाहिए था। अगर आता तो शायद और भी ज्यादा ये क्लोज मैच देखने के लिए मिल सकता था। Yeah, of course. No second thoughts about that. But yeah, this game finally said that, yeah, Shubham is still, in his best form right now. He could, of course, push himself a little bit more, but against a formidable opponent like Adi Zima, trying to draw a game, that's at least appreciable. Because at this point, Kerala Blasters FC, their opening into the eISL sort of begins with a loss this time. And FC Goa, what a beautiful start for these lads. Let's take a quick look at who the MVP is going to be. I don't think there's going to be any doubts on that. And there you have it. It's going to be Vanshaj Sharma, who goes by the name Love is You. Maybe if we get a chance to have a conversation, could really ask for all the good possible reasons. But regardless, 4 goals being scored by this player, and which says that the 2 goals that FC Goa had scored in their co-op game came through off of Adi Zima. Yeah, and Adi Zima, like शुरुआती में पहले गेम के अंदर जिस तरीके से उन्होंने लीड बना दिया था, उसके बाद केरला ब्लास्टर एफसी का आई थिंक मुझे लगता है कि शुभम का भी इवन जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा डाउन जरूर चला गया। एंड विद दैट गेम नंबर 2 जो कोऑप पे हम लोग को खेलते हुए देखने के लिए मिले, उस पे वो जो थ्रू पासेस थे मेनली जर्मन क्रॉस, उसके बाद से मानो कि केरला ब्लास्टर का जो डिफेंस है वो टूटता हुआ देखा एंड फिर से वो और जुड़ ही नहीं पाया। बट शिवम मेनली अगर उनकी बात करें तो
फर्स्ट हाफ उनके लिए खास नहीं था उतना, बट सेकेंड हाफ में आके जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनके टीम के लिए, क्योंकि अगर वो इधर कमबैक नहीं करते, आई थिंक उनके फैंस भी एंड उसी के साथ साथ वो खुद भी बहुत ज़्यादा नाखुश होते। हालांकि अभी भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राहत तो मिला ही होगा ये 2 गोल्स के साथ। Yeah, of course, a little bit of consolation, but not enough to impress the Kerala Blasters FC fans. But that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with our first matchup with FC Goa, sealing those 3 points for their club. But now, ladies and gentlemen, it is time that we head for a short little break, as right after is another amazing matchup waiting for you.